I'm just expecting a lot of good evenings. This call is now being recorded. So how's you all? All good? All great? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So is I'm audible? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. Yes, then ma'am. beautiful. Okay, Yes, so ma'am. okay, great. So I think it's our first session. What do you all say? Yes, ma'am. So let's have Yes, cameras on now. First interaction. Let's have a good interaction with each and everyone. After that, you can switch off your cameras now. Arey wow. Great. That's the spirit, Dia. thank you, ma'am. Arey great. Tanisha, Dheeraj, Aditya. ये कपड़वा के करेंगे तो भाई पूरा किया और ये Okay. So let me know your states that is there any I guess there is so much language bar between us and you. What do you say? Okay. So let me know how many of you are from India. Okay, Atif is from okay. Everyone, wow. That's a great sense of humor, na? Okay. Yes, we all are Indians. Okay, let me know how many of you are comfortable in Hindi, how many of you are comfortable in English, or how many are comfortable in Hindi English. So hand raise for English. Okay, both. It's fine. Okay, so let me know you're from all are from which state? Harini, you're from where? I'm from Andhra Pradesh, ma'am. Andhra Pradesh. Okay, which city? Tirupati, ma'am. Arey wow. Tirupati Balaji, right? Yes, ma'am. Okay. So yes, Gaurav. So Gaurav, you're from where? Yes, ma'am. You're from which city? Which state? Ma'am, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Then you are comfortable for Hindi, right? Yes, ma'am. Okay. So Ayan, actually this is also a mic testing, na? Like before starting any event, we used to say hello, 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 mic testing, mic testing. So it's a mic testing for you guys. Okay, let me introduce myself. Hello, bacho. I am Chinu and I am from Punjab. Is anyone from Punjab? Yes, ma'am. Me. Arey wow, great Dia. So I am from Punjab. So I can speak, write Hindi, English, and Punjabi. So let me know which language you're comfortable. Punjabi, to definitely not, na? Okay. Karnataka, Bangalore. Okay, Lohit. So I worked in Bangalore around 2.5 years. Okay.
Maharashtra. So Maharashtra students can also love, think about Hindi, right? Or not? Bihar, Ayodhya, they are all comfortable from. अरे वाह, अयोध्या में तो राम जी आ रहे हैं. क्या कहते हो? राजस्थान, ओके, नोएडा, दैट्स ग्रेट. जोधपुर, जोधपुर भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे किले है ना. ओके, वाह. मतलब मेरे को लग रहा है मैं हर जगह घूमी हुई हूँ. गाजियाबाद, ओके, ये तो अपना नेबर ही है, दिल्ली गाजियाबाद. ठीक है, तो भाई आप लोग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर हम क्लास शुरू करेंगे. ओके, नागपुर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो भाई आप लोग भी. आदित्य, आई गेस वी कैन स्टार्ट द क्लास, बट उससे पहले मेरे को थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन आप लोगों के बारे में चाहिए, क्योंकि फिर वही इशू होगा कि भाई मुझे हिंदी नहीं आई, मुझे इंग्लिश नहीं आई, तो मुझे थोड़ा पता चल जाएगा, देन आई कैन गो हेड विद द क्लास. आई नीड टू बी अ परफेक्ट क्लास ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ. डोंट वरी, जब मैं पढ़ाने लग जाऊंगी ना तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा के चली जाऊंगी. बोलोगे चिन्ह मैम काम बहुत ज्यादा देख के चली जाती है बातों में. तो इससे अच्छा पहले इंटरेक्ट कर लो. अगर अभी से बातें करनी शुरू कर दोगे ना तो आप लोगों को क्लास में मजा आने लग जाएगा, समझ आने लग जाएगा. अरे वाओ, अहमदनगर, ओके, महाराष्ट्र, ग्रेट. मतलब नाउ आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम सो मेनी स्टेट्स. ग्रेट. सो धनबाद, झारखंड, ओके, कानपुर. धनबाद से कौन सा क्रिकेट प्लेयर है? कोई है, मूवी में आया था ना शायद. ये नहीं. अरे वाओ, गीतिका, यू आर फ्रॉम नेबर, यू आर फ्रॉम लुधियाना. I just live nearer to Ludhiana. हाँ, रांची से धोनी है, ओके. सो आदित्य जी गुस्सा ना हो जाए, वी कैन जस्ट हैव स्टार्ट विद द सेशन. अगर किसी को कुछ बात करनी है दे कैन. अच्छा, मैथ्स किस किस को अच्छा लगता है, किस किस को बोरिंग लगता है? अरे यार, बस से बाहर है, ऐसा किसी को लगता है? ऐसा नहीं लगना चाहिए, मेरे होते तो नहीं लगना चाहिए. अरे तो मैच मेरे को बहुत इंटरेस्टेड लगता है. अरे वाओ, ग्रेट. अभी किसी ने मुझे बोला कि बोरिंग लगता है, मैं देखूं. अरे वाओ, अवनी का भी फेवरेट है, वाओ. तो भाई अच्छा, काफी बच्चों को ना ऐसे लग रहा होगा कि मैम, बच्चों मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, मैं बीटेक एमटेक हूँ, बट मैं बाय चॉइस टीचर हूँ. मुझे मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने टीचिंग करियर को चूज कर लिया. मतलब व्हेन आई वाज इन आईटी करियर, that time I also used to teach neighborhood children's. Let get together and start teaching them. Then I start ki just skip that career and go to teaching. So from last 10 years I'm just used to teach mathematics only. So now a chance to teach you all, guys. So let's get started. Yes, ma'am. Okay, so just definitely do one thing, dear friends. Let's have the curiosity, let's have the, जैसे ना कि आप, एक नशा होना चाहिए कि भाई मुझे करना है, मुझे आईआईटी जाना है, दैट्स ऑल. इसके अलावा देयर इज नो एम इन माय लाइफ. क्या कहते हो? जिस दिन ये नशा पैदा हो गया ना, ये नशा अच्छे वाला नशा है कि भाई मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, देन यू कैन डू इट. जिस दिन ये होगा कैजुअल वाला कि चलो ठीक है कर लेंगे, पढ़ा तो रहे हैं, देन आई गेस इट्स नॉट बेनिफिशियल ना. और आई प्रॉमिस कि भाई आप लोगों को 100% जो हर जगह पढ़ाया जाता है वही अवंती में पढ़ाया जाता है. ठीक है, अभी लाइक देयर इज द एंड ऑफ सेशन कि हाँ हमारे पास सिर्फ 1.5-2 महीने की टर्न है, तो 1.5-2 महीने हम थोड़ा सा स्पीड में चल सकते हैं कि भाई आप लोगों को सारे सारे चैप्टर्स थोड़े थोड़े पढ़ाने हैं. लेकिन आफ्टर दैट जब आप +2 में वापस आएंगे तो आप लोगों को वही स्टार्टिंग से हर चैप्टर को उतने ही दिन में कराया जाता है. ठीक है जी, क्लियर बच्चों? Great. So today I have very important things that I guess logarithm that you guys never seen in your books. And I guess many students are having problem in logarithm.
they used to go to their coachings and say कि log पढ़ा दो, but no one teach them log. Right? So logarithm and basics of inequality. Then from the next session, we will start ahead with the trigonometry, most interesting chapter of the mathematics. So let's get started. I hope you are all gone through the new JEE syllabus 2023. No, ma'am. Can you mute yourself? Okay. So, dear friends, if you find there is noise at your back end, just try to unmute yourself, because everyone belongs to different states. Their language is different, so that may be a different issue. So let's get mute whenever we find there is noise at your back end, right? Okay, then let's get started with the session. Everyone is having notebook and pen. Yes, ma'am. Very great. Yes, Can ma'am. you remove this? Okay. So my screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, dear friends, this is our lecture 1, and here is the 1st December, right? Our aim is to get into JEE with 2025, right? What is your aim? Your first aim is IIT, but if IIT is not in my pocket, then let's get to NIT or any state college, right? But ultimately, aim is to go for a BTech, right, dear friends? And BTech leads to me a good package. What do you say? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So I'm just going to start Yes, with the ma'am. inequalities. Ready, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, dear Yes, ma'am. friends, everyone knows that 3x plus 2. When I see 3x plus 2, जब मैंने देखा 3x plus 2 है, then everyone called it as expression. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. भी जब लगे कि मेरे को लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है, वहीं पे बोल देना, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then after that, म्यूट कर लीजिए सौरभ. जब 3x plus 2 में equals to आ जाएगा, जब 3x plus 2 में equals to आ जाएगा, then it is called equation, dear friends. Right, Yes, Harry? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, When 3x plus 2 replace equals to with greater than, less than, greater than equals to, less than equals to, Yes, ma'am. equals to, then these are called inequalities. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And everyone Yes, has ma'am. clear inequalities in their book of class 11. Right? So, dear friends, अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं ना, इनइक्वालिटीज बड़ी कंफर्टेबल है. क्यों? देखिए भाई, क्यों कंफर्टेबल है, जरा ध्यान से देखिए. अगर मेरे पास x plus 2, हाँ जी, हैंड रेस करा किसी ने. If I have x plus 2 greater than 0, right? If I have a expression inequality x plus 2 greater than 0, चाहे आप इसमें कुछ ऐड कर दीजिए, चाहे आप कुछ माइनस कर दीजिए, चाहे इसको कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरी इनइक्वालिटी को एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट लोहित? Right, ma'am. बट उसको एक ही बंदे से प्रॉब्लम है. सही में बताऊं तो उसको डिवीजन से प्रॉब्लम है. उसको फूट डालना अच्छा नहीं लगता. ठीक है? तो भाई उसको डिवीजन अच्छा नहीं लगता, जाने की डिवीजन विद -1, डिवीजन विद -1 या मल्टीप्लिकेशन विद -1, जाने कि इसको नेगेटिव लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता. बच्चों, जब मैं इस x plus 2 को मैंने लिखा तो मेरे पास ये बना x greater than -2, लेकिन जैसे ही मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई करा ना आयरन, तो मेरे पास क्या बना, -x plus 2, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया. ये क्यों हुआ? क्या किसी के मन में डाउट आया?
है डाउट? भाई देखिए, अगर 1 ग्रेटर देन 1/2 होता है, 1/2 से बड़ा है, Yes. Yes, ma'am. अगर मैं Yes, ma'am. -1 -1/2, तो क्या आपको ये पता चलेगा कि नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, बड़ा नंबर छोटा होता है? छोटा Right? नंबर बड़ा. हाँ, तो Yes, इनइक्वालिटी ma'am. चेंज हो गई ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब जैसे ही नेगेटिव से Yes, मल्टीप्लाई ma'am. ये डिवाइड करा, इनइक्वालिटी का मूव चेंज हो जाएगा. फर्स्ट थिंग क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. अब उसके बाद अब मेरे पास आते हैं कुछ इंटरवल्स में रिप्रेजेंटेशन. वो क्या होती है? देखिए, मेरे पास जब ग्रेटर देन या लेस देन जैसे सिंबल्स यूज होते हैं, तो नंबर लाइन पे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज करती हूँ होलो सर्कल. कौन सा? होलो सर्कल. राइट बच्चों? होलो सर्कल. एंड मैं यूज करती हूँ ये वाली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट्स. क्या कहते हैं इनको? ओपन ब्रैकेट्स. और अगर मेरे पास सिंबल होता है लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो मैं यूज करती हूँ डार्क सर्कल. कौन सा सर्कल? डार्क सर्कल. क्लियर? और इसके लिए मैं यूज करती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि क्लोज ब्रैकेट. पहले इतनी चीज सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक मेरे पास है x ग्रेटर देन 2, so I need to just draw a number line that goes through minus infinity to infinity. आपने एक नंबर लाइन को ड्रॉ करा जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगी. लेट्स मार्क 2. ये 2 है. ओके. ओके जोएल. Sure. So Joel, I just repeat same line in English as well in Hindi. Will it work? Because Monday Yes, onwards ma'am. the problem will be sorted. Yes, ma'am. So dear friends, we have a number line that goes from minus infinity to infinity, right dear? Yes, ma'am. Let's mark this point 2 on this number line. Will it okay? Okay. Then x greater than 2. X greater than 2, what it tells? It tells x is greater than 2 but never 2. Never be equals to 2. जो आपको x बता रहा है वो बता रहा है कि भाई मैं 2 कभी नहीं हो सकता, 2 से हमेशा बड़ा हूंगा. तो जब उसने इतनी बात बताई तो आपको पता है कि भाई जब नॉट इक्वल्स टू है तो उसको आपने किससे रिप्रेजेंट करना है? होलो सर्कल से करना है. राइट जॉय? सो ग्रेटर देन मीन्स greater than 2. Right everyone? So what it represents? It says 2 to infinity. 2 is open, infinity always open. Anyone is having any doubt in this part? No, ma'am. Anyone? हाँ जी रोहित बोलिए. Can you explain it once again, ma'am? Yeah, sure. In Hindi or in English? English is okay. Okay. So Rohit, see, we have x greater than 2, right? We are just going through the basics of intervals, that how to represent the expression that in inequality in intervals, right? So what I told na, कि that time you are having greater than or less than single, right? They are not equals to any value, but they are less than the value or greater than a value. Then we used to represent on a number line with a hollow circle, right? Yes, ma'am. And in intervals, we used to write in open brackets, right? Round brackets. Clear? But when you are having less than equals to greater than equals to, that means the value is included. That time we used to represent with dark circle. And in interval, we used to represent square brackets. Is it clear? Yes, ma'am. Then what you have done, Yes, ma'am. draw a number line minus infinity to infinity. Then 2 is a number. 2 is a breakpoint. Then it's only greater than. That is not equals to 2. Then I just put hollow circle on the 2. Yes, ma'am. Then greater than 2 means 2 to infinity.
Then Yes, I ma'am. have interval 2 to infinity. In the same way, if you're talking about minus infinity to infinity, you are again having 2. 2 is hollow. They are saying less than 2. Then which side I will go? Minus infinity. Negative side. So I just need to write smaller to greater. So minus infinity to 2, both side open. Is it clear? Clear. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then what Yes. about x greater than equals to 2? Yes, Positive side as well as 2. 2. Two, And 2 is going to be dark circle? And including 2. Yes, great. Yes, ma'am. So the interval look like, Yes, let's make it 2 to infinity, and infinity is always open. Right? Yes, ma'am. Then Yes, this Yes, ma'am. ma'am. shows you 2, 2 is going to be dark and negative side. So it's going to be minus infinity to 2. 2 is always closed. Infinity is always open. Hanji Harshit. Yes, Harshit. Okay. So let's move ahead. Yes, ma'am. Anyone facing any problem regarding that? Okay. I hope everyone is clear. Either they belongs to Hindi background or belongs to English background, right? Yes, ma'am. Okay. So dear friends, see, now I have one question for you. We are having x minus 3 greater than 0. I already told you, you can write it as x greater than 3. Yes, ma'am. Then by Yes, what ma'am. it's going to be the interval? It's going to be 3 to infinity and both side open. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Can Yes, Navya, ma'am. can you answer for the second part? And Rohit, can you answer for the third part? Whole circle minus infinity to 2 by 3. Okay. Minus infinity to 2 by 3. Do you mean to say that? Yes, ma'am. Okay. So just use open interval. I can let you say how to pronounce it. It's going to the open interval, right? Open interval, right? And minus infinity to 2 by 3. Is it clear? Better way? Yes, ma'am. Joel, clear? Yes, ma'am. Okay, Navya, can I expect answer from your side? Hey, Navya, are you there? Open 2 by 3 to infinity. Open. Okay. You're saying 2 by 3 to infinity and open interval, right? Is it right, Srinch? Yes. Harini, have a check. Ronak said it's correct. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. Wonderful. So let's solve this Sir. inequality. Let's solve this inequality. How to solve this? Just solve left side and right side individually. See, क्या मिलेगा आप लोगों को? It's going to be 20x minus 15 minus 8 less than 7x minus 35. Then we have the old method. वही पुराना तरीका. क्या x एक तरफ, constant एक तरफ, right? So 20x Yes. minus 7x less than 15 plus 8. How much? 23. So 23 20. 23. 35. So it's going to be 13x less than minus 12. X less than minus 12 by 13. So what's the interval? Minus infinity to minus 12 by 3. Open. Okay. Arey wow, great. Great, Rona, great. So is it clear to everyone now? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Now we are having a very important method. It's a trick, logically. It's a trick for JEE. ये मान लो
कि जब आपकी कोई ऐसी मेडिसिन काम नहीं करती और कई बार किसी बाबा जी का मंत्र काम कर जाता है, वैसे ही वेवी कर्व मेथड है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, वेवी कर्व मेथड ना विल हेल्प यू to solve a big expressions in class 12 for finding the intervals. I need to find where my function is increasing, where my function is decreasing. That time wavy curve method will work. Agree? For example, you're having x minus a into x minus b less than 0, right? Where a is greater than b. Okay. So what we will do, we will just make a number line and just put every factor is equals to 0. It means x minus a is equals to 0, x minus b equals to 0. This will give you us two critical points a and b. इसने आपको दो critical points दे दिए जब आपने अलग अलग को 0 के बराबर रखा, right? So just see which is greater and which is smaller. So b is smaller. b को आगे लिखेंगे, a को बाद में लिखेंगे. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और मेरे Yes, पास ma'am. what I have less than sign. That means both are not included in my intervals. Yes, ma'am. Okay, great. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So students, the way to solve this method, just from the right end, start putting positive, negative, positive, alternate signs. As the question asks you, what it asks is ask less than 0, means they are asking about when the function is negative, less than 0. So the answer is B to A and both side open there. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is a wavy curve. Let me give you one more example. Suppose I am having x minus 2, x minus 3 greater than 0. Just think, if the wavy curve method is not told to you earlier, so what was your approach? Multiply the both and then solve the equality. You used to find some hit and trial method. What are the values? Yes, ma'am. Right? You can think this, either the value can be less than 2, either the value can be 2 to 3, or it can be greater than 3. Yes, ma'am. सागर दोनों लैंग्वेज बोल रही हूँ बच्चे, दोनों लैंग्वेज बोल रही हूँ. ये मैंने बोला कि ये आज के दिन के लिए बैरियर है, इस वीक के लिए. मंडे ऑनवर्ड्स ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी. ठीक है सागर? क्योंकि दिस वाज इवन वी डोंट हैव आइडिया कि भी ऐसा कुछ इश्यू हो सकता है. तो वी जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बैच दिस वीक अलोंग विद योर बैच ना, तो उसमें सब हिंदी वाले बच्चे हैं. सो वी विल जस्ट सी कि कैसे हो सकता है, वैसे वी विल वर्क ऑन दैट. हाँ जी तनीषा, सुनिए तनीषा, मैं वही बता रही हूँ. मैंने ये मेथड अभी आपको इंग्लिश में बताया, मैं अभी हिंदी में बता रही हूँ कि भाई मेरे पास x माइनस 2, x माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, राइट? Yes, ma'am. तो तनीषा अपन क्या कर सकते हैं, हमें ये सोचना है, या तो आपके पास अर्लियर अगर चीनू मैम ने आपको बेबी कब नहीं बताया तो आप क्या सोचते हैं? आप बोलते कि या तो मेरी एक्स की वैल्यू 2 से कम होगी, या फिर 2 से 3 के बीच में होगी, या फिर 3 से बड़ी होगी, राइट ना? तो भाई उसमें सोचने में टाइम लगेगा. मैंने क्या सीखा है, मैंने सोचा है कि भाई यहाँ पे 2 नंबर लिखूंगी, यहाँ पे 3 लिखूंगी, होलो सर्कल डाल दूंगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाऊंगी, ऐसा ही सोचूंगी. फिर मैं क्या करूंगी, x की साइन पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव डालूंगी. क्वेश्चन ने पॉजिटिव पूछा है तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जाऊंगी, यूनियन 3 से इन्फिनिटी मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या सबके लिए वर्केबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wavy curve method. So can you answer for these questions both? और अगर किसी को लगे भी मुझे नहीं समझ आया, they can let me know ना तब तक.
Yes, done with both. Yes, ma'am. Okay, everyone. Yes, ma'am. Okay, great. So what's the answer? Minus infinite comma 3 union pi comma infinite. Okay. So everyone agreed? Okay. So dear friends, आप लोगों ने क्या करा होगा, जस्ट एक नंबर लाइन बनाई होगी, 1 और 4 दोनों ही ओपन है, प्लस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आया होगा, 1 से 4। और अगली बार इसके लिए आपके पास आया होगा माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। क्या कहते हो? Yes. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. तो रुद्र आपका शायद थोड़ा सा गलत आया, बताएंगे क्या गलती हुई? गलती पता चल गई क्या सबको? Yes, ma'am. Okay. So just have a look. These were the steps that we followed for the wavy curve method that you learned. Okay. So make sure your right hand side is 0 and coefficient of x is all factor is positive, right? You have to do one thing very first when you have to apply wavy curve method. क्या क्या लगाना है? अभी right hand side को 0 कर देना है और जो भी आपका x का कोफिशिएंट है उसका जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव कर देना है, राइट? फिर आपको क्या करना है, सारे फैक्टर्स को 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकालनी है, उसको नंबर लाइन पे मार्क कर देना है। फिर पॉजिटिव राइट साइड से अल्टरनेटिवली आपको पुट करते जाना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और लेफ्ट की तरफ चले जाना है। क्या कहते हो? क्लियर है? वेदांत क्लियर? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So can you think about this question? What are the critical points for this? X की वैल्यूज क्या क्या होंगी? 3, 3, 1 over 1 by 4, 4 and minus 1 minus. by 4 minus 2. We just represent it on number line. सबसे पहले -2, उसके बाद 1/4 और उसके बाद 3, और सारे के सारे डार्क है। क्या कहते हो? सही बोला? Yes, ma'am. फिर Yes, क्या ma'am. करेंगे? पॉजिटिव से शुरू करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्या है नेगेटिव? तो क्या आंसर आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू -2 क्लोज्ड यूनियन 1/4 to 3, both are closed. What you say? Agree everyone? Diya ji agree, Gaurav agree, Aryan, Vedant, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tanisha, Navya, Yes. Ma'am. Durga? Yes, ma'am. Okay, great. Yes, ma'am. So these were the inequality. जो जो बच्चे हिंदी इंग्लिश वाले बैरियर में थे वो मुझे जरा बताइए कि भाई काफी हद तक प्रॉब्लम सॉर्टेड है, समझ आ गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So let's get started with the next most interesting topic, that is logarithm. बढ़े आगे? Yes, ma'am. Logarithm is very important topic. If you have find that this is important for physics, for chemistry. क्या कहते हो? ऐसा आपको लगता है कि जब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों ने बहुत जगह पे लॉगरिथम देखा होगा, यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, Yes, Yes, ma'am. राइट? Yes, और ma'am. वो हमें ट्रबल भी करता है, हमें Yes, ma'am. प्रॉपर्टी yes, समझ ma'am. ही नहीं आती, कभी कभी टीचर तो लगा देते कि भाई ऐसा होगा, हम वही रह जाते कि पता नहीं कैसे कर दिया, फिर थोड़ा सा रट्टा ही लगा लेते चलो। क्या कहते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, हार्डली 10 मिनट देना, 10 मिनट के बाद लगेगा लॉग आ गया। बड़े सो डियर Yes, ma'am. फ्रेंड्स, जब भी आपको लॉग दिखे
log a to b is equals to c. तो ऐसा दिखने वाला log के पास दो चीजें होती है, two things are there. A is called base, जो उसके फीट में है, पैरों में है, उसको अपन बोलते हैं बेस. एंड अदर वन जिसको वैल्यू पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट. क्लियर? Right? See, just have a look. If you're having log 2 to 4, right? Log Let's 4 of say log 2. is equals to x. तो रुद्र मान लीजिए कि log 2 से 4 तक जा रहा है और ये x के बराबर है, तो 4 बराबर है 2 की पावर x. तो आप बोलोगे कि x की वैल्यू 2 आएगी. क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बच्चों log को एक्सपोनेंट में जाके सॉल्व करना तो ठीक है, मुझे एक्सपोनेंट आता है, राइट अजय? मुझे एक्सपोनेंट आता है, 6-7 में पढ़ लिया था. लेकिन थिंग इज दैट कि हर चीज को एक्सपोनेंट में तो नहीं कवर कर सकते या कन्वर्ट कर सकते. तो उसके लिए मुझे गौरव लॉग पढ़ना होगा. ये सुनो. Yes, ma'am. तो आदित्य व्हाट आई विल डू ना, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको सिखा रही हूँ कि भाई ये बेस है, ये आर्गुमेंट है. जरा समझने की, सोचने की, अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करना कि जो लॉग के पैरों में है ना, जो लॉग के पैरों में है उसकी जगह पैरों में ही रहती है. ये लॉग का जो बेस है A, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हरिणी, आई विल कम बैक टू यू इन इंग्लिश. तो जो लॉग के पैरों में a है ना, वो इसके भी पैरों में आएगा और ये आपको क्या दे देगा कि a की पावर c जो है वो b के बराबर होता है. तो हिंदी वाले बच्चों को क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब इंग्लिश वाले बच्चे. Dear friends, log a to b. Harini, what I said na, I said log have two things. One is base, other is argument. Base is always going to be a fixed value that is predefined. We just put value of argument. We just need to use value of argument, right dear? In Yes, fact, ma'am. this base is going to be used only mathematics that use different base. But when you're talking about physics and chemistry, here you are having only two base, either base E or either base 10, Okay, ma'am. right? Yeah, Vatsal, I will come back to you. So, dear friends, Harini, just let's have a look. That log A to B is equals to C. What I told you now, that log 2 to 4, this is called base and this is your argument. If I need to just solve this, what I can do, I just make this 2 in backhand, because everyone knows opposite of plus is minus, opposite of multiplication is division. Yes, ma'am. The opposite of log is exponent. Clear? Yes, ma'am. That is the example Yes, I ma'am. gave. I told you that whatever the base you are having, that the thing is in your feet of log, that will come back to feet of C. Clear? Okay, ma'am. If A is base there, then A will be the base for C also. That's why we written as B is equals to A power C. Clear, everyone? Yes, ma'am. Here, let's say we have example like log base to 10 is equals to 1000. Let's say it's x. I need to find x. What I can do? I just write it as 1000 is equals to 10 raised to power x. It means 10 raised to power 3 is equals to 10 raised to power x. So x is equals to 3, bachcho. Right, Nabya? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So is it clear to everyone? First thing. Hindi, English, Yes, everyone. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, dear friends, we have so many properties in log, but I will just make you write 4 properties and rest all the properties in cover in that only. Just have a look. Just focus over there. What's that? Very first thing. If you find that, अगर आप लोगों को कहीं पे मिल जाए, मैं बेस की भी बात नहीं कर रही हूँ, कि भी log a की पावर n, ठीक है जी,
ए की आर्गुमेंट की कोई पावर है हरनी, वी आर हैविंग पावर ऑफ ए, सो व्हाट इट विल कम, आई यूज्ड टू से, मेरी हर लैंग्वेज थोड़ी सी आप लोगों की लैंग्वेज जैसी होती है जो आप लोगों को समझ आ जाए, भाई ये जो एम है ना ये जंप मारता है और आगे आ जाता है। Yes, ma'am. हिट हुआ सबको? So m will jump and come forward. So what it look like? M log a. Clear? Very first property. Second, अभी तक तो still now you have just seen कि भाई मेरे पास a की पावर थी. If you find log a b, you are having multiplication of two functions, a into b. तो मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई फूट डालो राज करो, गांधी जी देके गए थे, गांधी जी देके गए थे, जनरल नॉलेज चेक कर लेते हैं। Yes, ma'am. Gandhi Day. गांधी जी देके गए थे, तो लॉग वही करता है, व्हाट लॉग विल डू, लॉग ए, अच्छा ब्रिटिश देके गए थे, लॉग ए प्लस लॉग बी, मल्टीप्लीकेशन से चीजें बढ़ती हैं तो भाई ऐड कर दिया। क्लियर? थर्ड, मैम लॉग ए अपॉन बी, डिवीजन से चीजें कम होती है या ज्यादा होती है, विल इट इंक्रीज और मिनिमाइज? Minimum. Minimize. So what it look like, log a minus log b. Clear? Then fourth one, by if I see log बेस की पावर भी m है और आर्गुमेंट की पावर m है, can anyone tell when we are having power of argument what it will do? n into log. जंप मारेगी, जस्ट इतना ही बता दो, जंप मारेगी पावर, Yes. तो भाई इसने भी Yes, जंप ma'am. मारना है, इसने भी जंप मारना है, ये ऊपर वाली पावर ऊपर जंप मारेगी, नीचे वाली पावर हरी नहीं नीचे जंप मारेगी, then rest remains same, log a to b. Clear to everyone? Rohit, Tanisha, clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Vatsal, clear? Ajay, Rudra. Yes, yes. Then fifth one. So Sagar, if anywhere I found e raised to power log base e to a, I told you na, e and log are anti to each other. They never sit together. E Yes. means exponent. एक्सपोनेंट लोग और एंटी, भाई एक्सपोनेंट के सिर पे लोग बैठ गया तो ये काट देगा इसको, ये आपको क्या दे देगा, ए। कब काटेगा, व्हेन योर एक्सपोनेंट बेस ऑफ लोग आर सेम, जब ये दोनों सेम होंगे तो सिर्फ आर्गुमेंट बचेगा। क्लियर बच्चों? फॉर एग्जाम्पल, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर log 2 to y, तो कितना बचेगा, व्हाट्स आंसर, Y. y। Y. Why? Why? Great. Then next property, sixth one, whenever you find that e log a to b, its base can be same, so what we will do, we can even interchange these two things and it will look like this, that b raised to power log a to e. Clear? Not able to see the screen. Ma'am, you are not present Oh, in the wait, screen. let me see. For my end, it's representing, but I'm just going to cancel and share it again. Check now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's Now okay. it's visible. So dear, see the sixth one. सब लोग sixth देखिए कि भाई सेम ही दिख रहा है, चाहे बेस सेम होता या नहीं होता, अगर e और जो b है यानी कि एक्सपोनेंट और जो आर्गुमेंट है वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Actually, Rudra, I think you're just trying to share your screen. Is it so? क्योंकि मेरे को अभी नोटिफिकेशन नहीं आया कि भाई रुद्रा जी कुछ कर रहे हैं. कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं रुद्रा. Okay. Now screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the sixth property is clear to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now I have last property, seventh one. See, if I used to write that log A to B is equals to 1 upon log B to A, तो I guess it's going to be tedious for you. लगेगा बहुत मुश्किल है. तो सीधा सीधा जो हिंदी वाले भाषा है भाई, देसी मेथड, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? log B by log A लिख सकते हैं, राइट हरनी? Yes, ma'am. ओके नव्या कमिंग बैक, राइट? तो क्या मैं 1 अपॉन लॉग A टू लॉग B ऐसा भी लिख सकती हूँ? कोई दिक्कत नहीं है. Yes, ma'am. और बाय यूजिंग द सेम थिंग आई कैन रीराइट इट एज 1 अपॉन लॉग B टू A. Is my formula is explained? Yes, ma'am. Clear. So Navya, see, sixth one, E log A. According to my convenience, suppose we are having 3 log base E to, let's say here it's E, wait, let's say 3 log base is 9 and here I am having 5. Right, Navya? Yes, ma'am. So if I need to solve this question, what I will do? I will just rearrange these things. It will give me 5 log base 9 to 3. Okay, ma'am. So 5, it will come 1 upon 2 and log 3 to 3. And base and argument is same, then it's going to be 1. So it's 5 raised to power 1 upon 2. That means root 5 will be the answer. Okay, ma'am. Clear? Yes, ma'am. Have everyone noted these properties? Ma'am. तो अभी थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. इट्स नो इशू कि भाई अगर आपका टॉपिक पूरा नहीं होगा तो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन. तो थोड़ा टॉपिक इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. देयर आर सम एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल बेस्ड अपॉन योर प्रॉपर्टीज, राइट? सबको दिख रही है? तो बच्चों सबसे फर्स्ट वन को अगर मुझे अटेम्प्ट करना होगा तो मैं कैसा लिखूंगी? लॉग बेस 2 और इसको 2 की पावर 2 लिख लूंगी. Yes, ma'am. Then this 2 is the power of argument. तो ये 2 जंप मारेगा, आगे आएगा. तो Yes, 2 ma'am. log 2 to 2. और आपको पता है बेस एंड आर्गुमेंट सेम हो तो कट के 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि log A to B का मतलब है, कमिंग बैक आदित्य, log B by log A होगा. तो log 2 से log 2 कट जाएगा तो आंसर 1 2 आ जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो स्टार्ट विद द बी. आदित्य देखिए, सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ था नहीं, मैंने सिर्फ लिखना बताया कि log A to B, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. जब मैं चाहूं अपना बेस चेंज कर सकती हूँ लॉग में. आपने log B to A को लिख लिया log B अपॉन log A, फिर उसको रिवर्स कर लिया और वापस से बेस चेंज कर दिया. पहले log का बेस A था, अब B हो गया. क्या आप देख पा रहे हो? Yes, ma'am. Okay. So let's answer for the B, C, D and E. Ma'am, option B, question B is 3 and then half and then minus 3 and then minus 2. Okay, great. So dear friends, for the B1, is it 3 for everyone? Answer is 3. 3. सबके लिए 3 आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
और भाई सी के लिए आंसर 1/2 आया हरिणी जी. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Then for D, what's the answer? -3. सबके लिए -3 है. Yes, ma'am. Okay. Then for the E, -2. भाई सबके लिए -2 है. Yes, ma'am. अरे Yes, वर्ड, ma'am. बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, सब बड़े इंटेलिजेंट है. ओके पियासा, देखिए बच्चे डी और ई को देखिए. जब मुझे डी को देखना था, क्या मैं इसको log 2 8 की पावर -1 लिख लूं? कैन आई राइट इट एज 2 raised to power -3? तो -3 आंसर आएगा. Yes, ओके. ma'am. और ई के लिए मेरे को log 4 raised to power -1 4 raised to power 2, और मैंने पढ़ा ऊपर वाली पावर ऊपर नीचे वाली पावर नीचे, और log 4 to 4 ये तो एक दूसरे को काट देंगे, तो आंसर बना -2. तो बताइए. ठीक है. Anyone having any doubt till there? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay, let me know the answer of this question. Be quick. B. Okay. B. Okay. So Ma'am, dear B. friends, very first thing says that log 2 raised to power 3 और उसकी power 1/2. It means 3/2 is going to be the answer for the first one. So first one is true. Yes, ma'am. Yes, ma'am. B. Yes, ma'am. Log base 4. Log base 4. Then can I rewrite it as, if I need it 16, then can I rewrite it as 2 raised to power 3, and we are having power 1/2, and here we are having 2 raised to power 2. Will it give you 3/2 and 1 2 more? That means 3/4. So it's also true. Yes, ma'am. C is also true. So answer is going to be none of these. Yes, ma'am. भाई किसी को भी डाउट है? Anyone having any doubt, any difficulty? No. Clear? No, ma'am. Let's solve this question. Let's have a look. What I will do now, I will share this whole PPT with you. You can try at your end. No issues. Then we will just continue from there only. Right here. So how to solve? See, we need to change the argument in the terms of base. I can rewrite it as log 2. इसको अपन लिख लेंगे log 2 2 की power 4 plus log 2 2 की power -2. क्या सबको क्लियर है? एग्री है? इसका दिख गया, 4 जंप मार के आ गए, -2 आ गए, तो आंसर 2 आ जाएगा बच्चों. Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then Yes, the ma'am. point. This first property, everyone knows that base and argument is same, then that this is equals to 1. What do you say? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. If log base a to 1, base is a, and every time the argument is 1, this is equals to 0, and it's a fixed result. That means log of 1 is always 0. Anyone having doubt in this property? No, ma'am. No, ma'am. Anyone needs proof? Yes. See dear, you are saying that log a to 1 is equals to b. It means 1 is equals to a raised to power b. Anything's power 0 is 1. So a raised to power b. So this says b is equals to 0. Clear? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. रेडी? ये पैरों में है, ये भी पैरों में आएगा. So 256 is equals to x raised to power 4. It means 4 raised to power 4 is equals to x raised to power 4. This says x is equals to 4. Agree? Yes, ma'am. Option B. Great. Option B. Yes. Yes, ma'am. So these are the properties already known to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका आंसर कितना आएगा फटाफट बता दीजिए. लॉग की प्रॉपर्टी जब भी लगेगी तो बेस सेम होना चाहिए. तो सबसे पहले चेक करिए क्या बेस सेम है. Okay. Yes, ma'am. 10 answer. So have you written as log 10 to 30 by 3? It means log 10 to 10. So answer is going to be 1. 1. Great. Yes, ma'am. Last question for the day. कुछ तो लोग कहेंगे 4/7 into 33 प्लस वाला मल्टीप्लाई माइनस वाला डिवाइड बच्चों. 7 3s are 21, 3 6 are 18, 11 2, 11 3, 2 to the 4, 2 and 3 6. So you get log 1. And log 1 is 0. 0. 0. अरे तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को भेज दूंगी. आप लोग अपने एंड पे एक बार ट्राई कर लेना. सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं. इनको अपन नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. राइट? तो भाई आज व्हाट यू हैव लर्न टुडे सेशन. व्हाट वर द कांसेप्ट दैट यू लर्न इन टुडे सेशन? कैन एनीवन आंसर? Inequalities. Inequalities. ओके. Wave method. ओके. Basic of logarithm. अरे वाह. So can you answer? Okay. Harshit, can you answer for the A part? What's the log A to A? 1. 1. Okay. 1, ma'am. Devyut, log One, ma'am. A to 1. 0. 0. 0. 0. 0. Okay. So let me find a new Ritik. Ritik, can you answer for the third one? Is it true or false? True. Areva. Great. True. Great. True. Wonderful. It means whatever the things we have learned, जो भी चीजें आप लोगों ने आज पढ़ी, वो सबको उतनी चीजें समझ आ गई हैं, राइट? तो मैं क्या करूंगी, मैं ये नोट्स आपको जस्ट आफ्टर द क्लास अभी भेज दूंगी. तो जो डीपीपी थी वो मैं अभी नहीं भेज रही हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कंसेप्ट को थोड़ा टाइम चाहिए. अगली वाली क्लास में अपन कंटिन्यू कर लेंगे. लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आप लोग एक बार अपने एंड से गो थ्रू जरूर करके आइएगा. ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है. Okay, ma'am. तो नेक्स्ट सेशन वैसे ही Okay, ma'am. कि हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे. बट अगर हमें लगेगा कि अगला सेशन अभी हमारा लॉग पे लगेगा, देन वी विल कंटिन्यू दैट. क्लियर? Okay. Okay, ma'am. And this is the logo Okay, that ma'am. class contained in my lecture, that by one step make you success. एक एक स्टेप बढ़ते चलो, थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करते चलो अपनी, तो सक्सेस मिल जाएगी. क्या कहते हो? So let me just stop the recording, then let me know your reviews.